Hello everyone. So let's continue our chapter How Many Squares of class 5th. In our first video, we have already discussed our basics, certain basics about this chapter. That what do we mean by square? What do we mean by rectangle? I also explained you that how rectangle is actually a group of squares, right? So now we'll go ahead and see the answer textbook page 34 exercise. All right, so let's begin. See, in this question first, they're saying that measure the side of the red square. This is your square, okay? It's black color here, but it's given red in textbook on the dotted sheet. So this is your dotted sheet. Excuse me. This is your dotted sheet. And on this, they have given you one square. Draw here as many rectangles as possible. Okay, so here we have to draw as many rectangles as possible, but using 12 squares, right? So this is very important. You have to draw rectangles. Okay, and using how many squares? 12 squares. So I already told you that we can create rectangle using squares. So now let's see that. How? See, first of all, we'll see here. This one, they have already given one square, so we are not supposed to take that square. Okay, so let's start taking one square, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, and then here this is 12. So this is your 1. See, these are your 12 boxes, right? These are your 12 boxes. So when you take here 12, so to make 12, again you have to multiply it with 1. Means when you are taking the length of the rectangle 12, then the breadth has to be 1. Why? What is the reason? Because here they have told you to take only 12 squares, and that's why we are taking 12 boxes here as a length. So naturally 12 ones are 12, so breadth would be 1. All right, so that's why we have taken 12 length and breadth 1. Okay, तो इस तरह से हमारा ये एक rectangle बन गया. Now we are left with 2 boxes, means 2 square boxes. Okay, अब हमारे पास 2 square boxes हैं. So here the length would be 2. तो अगर लेंथ 2 है बट मुझे तो सिर्फ 12 बॉक्सेस चाहिए, तो क्या करूंगी मैं? सिंपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, बिकॉज 2 6 आर 12, राइट? तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी? 1 2 3 4 5 6. Cool, we already have 6 box here, so I'll just draw it like this. 6, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से ही मैं कंटिन्यू करूंगी. सो ये मेरा हो जाएगा 12 boxes का one more rectangle. Now let's take here. Okay, for example, we are taking here 1 2 3 4. Okay, see, I'll show you. See guys, we have already taken 12 multiply by 1, मतलब जहां पे length 12 थी और breadth 1 थी. ठीक है, now again we have taken 2 6. ठीक है, 2 6 are 12, तो ये भी एक ले लिया. अब हम ट्राई करते हैं 3 लेके. तो 3 अगर हम बॉक्स लेते हैं तो 3 4 ठीक है. सो 1 2 3 4, मतलब अगर 3 लेंथ होती है तो ब्रेथ हमें कितनी लेनी पड़ेगी? 4. वाई? बिकॉज 3 4 12. सो लेट्स टेक दैट 1 2 3. ओके, तो 3 हमारी हो गई लेंथ और ब्रेथ कितनी हो गई हमारी? जस्ट अ मिनट, I need to take this. Okay, so 1 2
3. You can take 4 also, okay? But here we have taken 3. So right here we will take 1, 2, 3 and 4 like this. So 1, 2, 3, 4. Right? Similarly, the same thing we can take here also. So again 1, same box we can take here. 1, 2, 3. So 1, 2, 3 here. Right? So one more rectangle will be there. Again one more rectangle will be there. See? Easy? Right? Now one more rectangle can be there. See? And now if you notice, this first rectangle and this last rectangle, that also will be same. So we can have one more rectangle with 1 into 12. Okay? So let's draw that also. So how many squares we are getting? 1. Let's tick mark that. How many squares we are getting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is 7. Right? See, we can't take this. This we can't take. Now why? What is the reason? Because here they don't have 12 boxes, right? So we can't take this. So total how many squares we can make? 7. Right? See, आपको बता देंगे कि इतने इतने स्क्वायर्स हैं, बट वो आए कहाँ से? तो वो हमें समझना जरूरी है. फर्स्ट हमने लिए 12 बॉक्सेस, ठीक है? तो जब हमने लेंथ 12 की ली तो नेचुरली ब्रेथ हमें 1 की लेनी पड़ेगी, बिकॉज रेक्टेंगल कैसे बनता है? लेंथ और ब्रेथ से, और हमें उसमें 12 बॉक्सेस को फिट करना है, तो नेचुरली 12 इंटू 1. अगर हम 2 बॉक्स लेते हैं, 2 स्क्वायर बॉक्स लेते हैं, तो हमें अगर लेंथ 2 लेते हैं तो ब्रेथ कितनी करनी पड़ेगी हमें? 6, बिकॉज 2 6 आर 12. वाई वी आर रनिंग आफ्टर 12? बिकॉज उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि हमें सिर्फ 12 बॉक्सेस यूज करने हैं, इसलिए. 3, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 4s are 12, right? And now our sheet is over, so we cannot draw any further, right? अगर होता तो हम और भी कर सकते थे, जैसे 4 लेंथ लेके इसको अपोजिट करके, जैसे रिवर्स करके 4 लेंथ ले सकते थे और 3 ब्रेथ ले सकते थे, वैसे एक अलग सा बॉक्स बन जाता, रेक्टेंगल बन जाता. 6 लेंथ ले सकते थे और 2 हम क्या कर सकते थे? ब्रेथ ले सकते थे. तो इस तरह से भी कर सकते थे, राइट? बट बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द शीट, they have not given us bigger one, and that's why we are not going to do that. But this is just for your information. I'm giving you that these are the possibilities. Okay, we can have these many rectangles. All right. Okay, so this is how we can solve our first question. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? हमें एक शीट दी गई थी, उसमें आपको बोला था कि रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. कैसे? स्क्वायर्स यूज करने हैं. कितने स्क्वायर्स यूज करने हैं? 12 स्क्वायर्स यूज करने हैं, ठीक है? तो ये फर्स्ट वाला हमने इग्नोर किया. सेकेंड से हमने स्टार्ट किया काउंट करना. 12 बॉक्स लेके मैंने एक बनाया. बिकॉज ये 12 उसकी लेंथ है, तो नेचुरली यहां मुझे 1 ही लेना पड़ेगा बॉक्स. 12 1s are 12, राइट? फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे 2 बॉक्सेस मेरे पास अवेलेबल है, सो 2 मेरी लेंथ हो गई. तो अगर 2 मेरी लेंथ है तो मुझे और कितने बॉक्स लेने पड़ेंगे, या ब्रेथ कितनी लेनी पड़ेगी, सो दैट आई कैन फिट 12 स्क्वायर्स इन दैट. सो इट्स इजी. अगर 2 अवेलेबल है तो 6 लेनी पड़ेगी, बिकॉज 2 6 are 12. फिर मुझे पता चला यहाँ पे मैं 3 ले सकती हूँ, तो 3 लिए मैंने. तो अगर मैं 3 लेंथ लेती हूँ तो मुझे ब्रेथ कितनी लेनी पड़ेगी? 4, बिकॉज 3 4s are 12. वाई? बिकॉज मुझे 12 बॉक्स फिट करने हैं उसमें. इसी तरह से मैं इसको कंटिन्यू किया, ठीक है? तो मुझे पता चला कि these 4 5 6 and 7, इस तरह से मुझे 7 स्क्वायर्स मिल सकते हैं, राइट? सो वी कैन सी दैट द साइज ऑफ द स्क्वायर इज 1 centimeter, राइट? सी, ये सारे स्क्वायर्स क्या है?
1 centimeter, और इस तरह से we can get 7, right? 12 1 का 2, see, I'll give you 12 और 1 के मुझे कितने मिले बॉक्सेस? 2 बॉक्सेस मिले. See, this one, and this one, right? Okay, then okay, now I can say that 2 और 6 के मुझे कितने बॉक्स मिले? 1. 3 और 4 के मुझे कितने बॉक्स मिले? 1 2 3 4. 4. So 4 plus 1 plus 2. Okay, 4 plus 1 plus 2. So that gives us 7. That gives us 7, right? तो इस तरह से हमें 7 boxes मिले. With the next question will come in the next question will come in the next video. So till then, goodbye.